Good evening to all of you. Am I audible? Yes, sir. Okay, right. So in last class, we have discussed about the basic concepts about industrial revolution. We all know the meaning and the definition of industrial revolution. Clear? The industrial revolution started in uh, Britain. Okay, have I shared modern history class link? Okay, तो पुराना वाला जो लिंक है ना उसको ग्रुप में आप लोग शेयर कर लो, ठीक है ना? क्योंकि लिंक इज द सेम, लिंक इज द सेम, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला ही लिंक है। तो लिंक गलत चला गया होगा, तो जो पहले वाला लिंक है ना, इसके पहले वाली क्लास का वो लिंक शेयर कर लो। आई एम शेयरिंग द न्यू लिंक, वन सेकंड। आप लोगों ने पुराने लिंक के साथ ज्वाइन किया ना पूजा? वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पहले वाला लिंक था उसको एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में। Shade, sir. ओके, ओके। नाउ, so I have discussed all important concepts, basic concepts here. Now, with the help of some slides, we will try to learn this topic better. Okay. So let's look at the some of the slides here. These are very important. This concept I have already discussed with you about this industrial revolution. That industrial revolution was a phase of transition. Clear? From creating goods by hand to creating goods by using machines. I have already discussed with you that we were talking about factory system of production. Clear? Its start and end are widely debated among the scholars. This also I have discussed with you. But generally, the scholars believe that the industrial revolution that started in Britain, that was also the first phase of industrial revolution. This is the time period. Clear? I have already discussed this with you. The industrial revolution is the name given to the what? Enormous changes that took place with technology. So here the role of technology will become important. Machines will become important. Farming, mining, manufacturing, and transportation system also. It means the changes that we are seeing is not only in the field of technology that were used in the machines or the factory system of production, but we also see the use of technology in farming, the use of technology in mining activities. Okay, this all increased. Clear? That is one part. Now, if we look ahead, okay, we can say that the industrial revolution was transition. Okay, from 1760 to 1840. Again, this is the same definition. Clear? हैंड प्रोडक्शन मेथड से मशीन्स पे जाना, न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का आ जाना, आयरन प्रोडक्शन प्रोसेस का आ जाना, साथ ही साथ वाटर पावर का improved efficiency. That is what? Okay, steam power, steam based engines will come. It's talking about that steam power, the use of the steam power and the development of machines tools. Clear? Now this is an important quote about the industrial revolution, that from around the middle of 18th century. What is this middle of 18th century? 1760 to the middle of 19th century. What is the middle of 19th century? According to the definition, this is 1840, right? Historians still disagree about the precise dates. There was another revolution, that is industrial revolution. It means in this phase there was another revolution that is known as industrial
revolution, which proceeded much more slowly. Okay, it means its progress was slow, but it will be capable of bringing important changes in the world. So the progress was slow, okay, and less dramatically, okay, it changed the human society. It means that it has profound influence on the human society, okay, than any other event during the last 500 years. It means this industrial revolution was capable of bringing a lot of changes. And the events in Europe, for example, those events in Europe that took place after this period, each and every event, okay, was affected by this industrial revolution. For example, industrial revolution कब है? 1760. It started first in Britain. So its influence can be seen in French Revolution also. That is R1. Its influence can be seen in R2 also. Its influence can be seen in R3 also. You all know the concept of R1, R2 and R3. Got it? Its influence can be seen in France. Industrial revolution taking place in England. And influence is seen where? Influence is seen in France. Okay. I was saying that industrial revolution was taking place in England and influence can be seen in France. Between this period, the period was 1848 to 1852. France emerged as a republic. Okay, so in the emergence of France as a republic, we see there is the influence of industrial revolution. What about the process of unification in Germany? Unification of Italy and unification of Germany. Yes, here also the influence of industrial revolution can be seen. What about the process of growth of nationalism in Europe? Here also the influence of industrial revolution can be seen. What about the phase of new imperialism in Europe? New imperialism. New imperialism ka time period you all know. That is from 1870 to 1914. Here also the influence of industrial revolution can be seen. First World War, influence of industrial revolution can be seen. Colonialism, influence of industrial revolution can be seen. Okay. India was developed as a British colony. Influence of industrial revolution can be seen. So there is no any event in this world which is not affected by the industrial revolution. And that's why this quote says that industrial revolution had its effect on human society. Okay, all aspects will be affected by this industrial revolution. It started in Britain, that is Great Britain, clear? And in Great Britain, there were a large number of technical innovations, clear? For example, the invention of the steam engine, clear? The new ways to make iron, that is invention in the field of mining activities, clear? Britain had lots of coal and iron ore. I have already discussed with you. The proximity of the sources or the mines of these coal and iron ore. This is also one of the most important factor. And this coal and iron ore was needed to make power. And power is needed for progress. Industrial revolution. अभी देखो बीच में power disrupt हो रहा है, तो हमारी class भी disrupt हो जा रही है. तो power is very important ना, clear? So the power is very important here, and power is an important factor. Coal, iron ore plus steam power. Steam power. They will be the sources of power. The machines will be used. So power plus machines. They are the most important factor for the growth and promotion of industrialization. And this helped Britain, okay, in making it politically stable. इससे Britain क्या हो गया? Politically stable. Britain emerged as a major colonial power at that time. It was already a major colonial power, but industrial revolution helped Britain a lot in establishing political control over the colonies, because in different parts of the world Britain was there to do trade and commerce. But when industrial revolution come, okay, the need will be realized that if you establish political control,
इट विल बी इजियर फॉर अस, हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा ये, राइट, टू स्टैब्लिश कंट्रोल देयर। ओके, यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन 1825 कॉटन वॉज ब्रिटेन्स बिगेस्ट इंपोर्ट, कॉटन टेक्सटाइल्स वेर ब्रिटेन्स बिगेस्ट इंपोर्ट, यानी कि कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल्स ब्रिटेन को इंपोर्ट करना पड़ता था, और इंपोर्ट का सबसे बड़ा आइटम था कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल्स। सो व्हेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विल कम, व्हाट ब्रिटेन विल डू, इंपोर्ट का जो सबसे बड़ा आइटम है दैट इज कॉटन टेक्सटाइल, उसी फील्ड में तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, एंड दिस इज द रीजन that industrial revolution in Britain was first industrial revolution. Basically, it was a textile revolution. Got it? Okay. So that is the most important thing, that it was basically textile revolution. Now, different machines were introduced here. Okay, these machines were invented by these. This is the name of the, you can say that, scientists who invented these machines. And in British industrial revolution, which was basically a textile revolution, these machines hold the most important place. For example, spinning jenny was invented by James Hargreaves, water frame by Richard Arkwright, and all were used in what? Textile production. सबका इस्तेमाल कहाँ हो रहा था? Textile production. Before this, the textile was basically handmade. It was a part of handcraft. और अब टेक्सटाइल बनाने के लिए किसका यूज होगा? स्पाइनिंग जेनी विल बी यूज, वाटर फ्रेम विल बी यूज, spinning mule will be used, power loom will be used, cotton gin will be used, okay, Robert's loom will be used, self-acting mule, okay, always sieving machine will be used, sieving machine हम use करते हैं ना कपड़ों की सिलाई के लिए, right? So all these are the machines that are used in making textile. So industrial revolution in Britain was first textile revolution. Okay, these are important facts. That spinning jenny was invented by James Hargreaves, water frame by Richard Arkwright, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। स्पाइनिंग म्यूल बाई सैमुअल क्रॉम्पटन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पावर लूम बाई एडमंड कार्टराइट, ठीक है। ये और जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट दिस इमेज, in industrial revolution in Britain, it was first a textile revolution, and what do you see? This is power loom in a textile mill. It means now textile was manufactured with the help of machines. This is power loom. So handcraft is replacing. This is flying shuttle. It was also used in making textile. This is spinning jenny. This machine was used in making cotton textile cloths in Britain. This is Richard Arkwright's water frame. Again, it is used in making textile. Okay. This is what? Crompton's spinning mule. Again, it was used in making textiles. This is what? Power looms that were used in British industries. This was also used in making textiles. This is Robert's loom, invented by Roberts. Clear? This was also used in Britain factories. This is sheaving machine, invented by Howe. सिलाई मशीन है, right? It was also, ऐसा तो हमारे पास भी, ठीक है, बहुत सारा है ऐसा, right? So this is what, this was invented at that time, and this was one of the most important invention. And what is this? Okay, Luddite smashing textile mills. What does it mean? In last class I have discussed with you. एक विलियम कार्टराइट की कहानी मैंने बताई थी. When machines will come, when factory system of production will come, so what will happen? Okay, layoff will be done because machine will replace manpower. So in this way unemployment will increase, so obviously the people will become angry, and this is the manifestation of their anger. Luddites was a group of people, and their leader was Ned Ludd. Okay, and these people, these two people standing here are Luddites. They are the fan and supporters of, okay, this person Ned Ludd, and they don't like factories to be installed. They don't like machines to be installed. They were opposing. So industrial revolution in Britain also has to face opposition of people. Got it? उनको opposition का भी सामना करना पड़ा. For example, opposition of Luddites, the story of William Cartwright, and these people are doing what? They are smashing textile mills. घुस गए कहीं से फैक्ट्री में, तोड़ रहे हैं मशीनों, क्योंकि ये मशीन के आने से क्या है, नाराज. Okay, now concept I have already discussed with you. This is also a machine that were used in making textiles in Britain, and all these machines, okay, will do what? They will help Britain in
रिड्यूसिंग द इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ब्रिटेन क्या करेगा, इंडिया से होने वाले इंपोर्ट को कम कर लेगा। और जब आपका इंपोर्ट कम हो जाएगा and the same textiles will be exported to Indian market and other market of Europe, other markets of Asia. So what will happen? The balance of trade will become surplus. So there is a close correlation between establishment of British rule in India by the Battle of Plassey in 1757 and the Industrial Revolution that came to Britain in the year 1760. दोनों में क्या है, एक close relation है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडिया का रिच एक्सपोर्ट, दिस इज वन पार्ट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर। सो राइट दिस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। वी नीड टू डिस्कस द consequences, that is one of the most important part, consequences of industrial revolution। अच्छा, consequences के बाद एक रुक जाओ, before consequences, okay, you will draw a simple sketch so that you could understand the development of industrial revolution in Britain। तो एक और part है, simply मैं आपको explain कर दूँ। Write this: growth and development of industrial revolution in other countries, in other countries, growth and development of industrial revolution in other countries। The basic understanding is required here, and what is that basic understanding? तो समझो इस बात को। Will Britain provide help to the other European countries to get industrialized? What is your answer? Yes or no? No. If Britain will help other countries in getting industrialized, तो इसका impact क्या होगा? Those countries will become competitors of Great Britain. So Britain will not do this. Will Britain install machines in the colonies where they are ruling, like India? Will they develop the factory system of production in India? No. Because if they will do, what will happen? Their exports might be reduced. वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखें कि ब्रिटेन is not in the favor of giving help and support to any other country, even if it is European country or its colonies, to get industrialized. And what is the main reason? The main reason is that it will increase competition, and this competition is not good for Britain। ये competition Britain के लिए अच्छा नहीं है। This is problem. So the first country which experienced industrialization was Britain, and this industrialization made Britain what? Great Britain। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ही ब्रिटेन को क्या बनाया? ग्रेट ब्रिटेन। अदरवाइज बेचारा ब्रिटेन ब्रिटेन ही रह जाता। ठीक है ना? सो दिस इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इफ समवन आस्क यू that which is the most important event in 18th century, so what will be the answer? Industrial revolution। The second is French revolution। ये सबसे important events है। ठीक है ना? तो इंग्लैंड के बाद, ओके, ब्रिटेन के बाद, this industrial revolution here we see in 1760। Then the industrial revolution will come in Belgium, and the year is 1850s। देखो टाइम लैग, नोटिस करना इस बात को, टाइम लैग, right? Then industrial revolution can be seen where? In France and Germany, France and Germany, and this also will be seen in mid of 19th century, mid of 19th century। ये R2 R3 के बाद ही होगा ना, when France will become republic 1848 to 45। ठीक है, तो उसके बाद होगा ये सारी चीजें। ओके, फ्रांस एंड जर्मनी। देन वी सी व्हाट जर्मनी में क्या था? द क्रिएशन ऑफ ज़ोलेवरीन। याद आया कुछ आपको? द क्रिएशन ऑफ ज़ोलेवरीन। विल इट हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जर्मनी? यस। ज़ोलेवरीन का कॉन्सेप्ट क्या है? कस्टम यूनियन का कॉन्सेप्ट है। मैं पहले से ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ज़ोलेवरीन का कॉन्सेप्ट क्या है? कस्टम यूनियन। सो व्हेन जर्मनी विल बिकम अ नेशन, independent nation in 1870-71, so Germany will do what? It will promote industrialization to increase its capacity, okay, economic capability। so Germany में भी industrialization होगा। and after civil war in America, civil war कब खत्म होता है? civil war की कहानी आपको पता है कि north states were industrialized। इसका मतलब there was industrialization। सदर्न स्टेट्स में क्या था? प्लांटेशन था, प्लांटेशन एक्टिविटीज। नॉर्थ में क्या था? इंडस्ट्रीज। एंड व्हेन slavery system will be abolished in 1865, so this is the time exactly 1860s
okay, that after this period you will say that the identity of US will be changed completely. US will be well established as a textile, steel and okay shoe industry. US का पूरा approach ही change हो जाएगा. तो you can say that after 1860s, right, 1860s, okay, US will be established as an industrialized nation. US will be established as an industrialized nation. US इंडस्ट्रियलाइज नेशन हो जाएगा. एक और कॉन्सेप्ट रिलेट करो. 1870 से कौन सा फेज शुरू होता है? न्यू इंपेरियलिज्म, वेयर यूरोपियन कंट्रीज आर फाइटिंग टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कॉलोनीज. कब से शुरू होता है? 1870. बट व्हाट इज द यूएस अप्रोच? एंटी कॉलोनियल, एंटी इंपेरियलिस्टिक अप्रोच, डेमोक्रेटिक अप्रोच. अब देखो, अगर कोई कंट्री जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी है तो ब्रिटेन तो रोक सकता है यूएस को ट्रेड करने से. तो यूएस के लिए क्या फायदे में है? यूएस किस आइडिया को प्रमोट करेगा? एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी इंपेरियलिज्म. यूएस विल आस्क द यूरोपियन कंट्रीज दैट ओके दे शुड गिव द पीपल द राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हु आर लिविंग इन द कॉलोनीज. कॉलोनी में रहने वाले लोगों को क्या दे दो? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. अगर ये राइट कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मिल जाएगा तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंट्री के साथ उनको अपने ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेशंस रखने हैं. एंड दिस वाज द नीड ऑफ यूएस. ये यूएस का नीड भी था दैट यूएस इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है तो उसको भी तो मार्केट चाहिए. यूएस आल्सो नीड मार्केट्स फॉर द सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, बट getting access to market was very difficult due to this colonialism. Okay, that's why US approach is what? Anti-colonialism. Plus its history, that US itself was a colony of Britain, so when it become a free and independent nation, its ideas will be anti-colonial. For example, when India will become free, what is the outlook of India? Anti-colonial, anti-imperialism, anti-racism. ठीक है, तो हमारी पूरी की पूरी इंडियन नेशनल मूवमेंट भी तो इसी बात को लेके थी. ठीक है, कि हम इस चीज से लड़ रहे थे, तो ऑब्वियस है कि इसका फायदा हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, यूएस से. और नाउ इसके बाद रशिया. रशिया, व्हाट अबाउट रशिया? रशिया की क्या कहानी है? ओके, in Russian Revolution we will discuss about this, but you can write here that Russia was the last among the big European powers to get industrialized. ठीक है, देखो, basically industrial revolution started in 1860s itself in Russia. 1860s में शुरू हो गया था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? ओके, इट स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. और जब फॉरेन कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस दौर में आएगा तो क्या वो एक्सप्लॉइट नहीं करेगा आपके रिसोर्सेज को? तो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हुई कि रशिया में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसका फायदा रशिया के लोगों को मिल ही नहीं पा रहा था, बिकॉज इसमें ज्यादा रोल किसका था? फॉरेन पावर, फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो ऑलवेज रिमेंबर, write this point that write this industrialization in Russia started in 1860 itself, but industrialization in Russia started in 1860s itself, but here started in 1860s itself, but here, but here, but here, the role of foreign capital, role of foreign capital was important. Role of foreign capital was important. यहाँ पे रोल किसका इंपॉर्टेंट है? फॉरेन कैपिटल का. तो write this, the actual benefit, write this, the actual benefit of this industrialization, the actual benefit of this industrialization was not, the actual benefit of this industrialization, okay, was not in the favor of Russian people, and this was one of the major concern, and this was also one of the major concern, this was also one of the major concern, this was also one of the major concern in Russian Revolution. ठीक है, what about Japan? What about Japan? So write one point here that okay,
Japan was the first Asian country to get industrialized. Japan was the first Asian country to get industrialized. Clear? To get industrialized by the end of 19th century. Japan was the first Asian country to get industrialized by the end of 19th century. Okay. और जापान इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में भी किसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा? स्टील, मशीनरी, मेटल गुड्स, केमिकल्स. तो बताओ पावरफुल होगा कि नहीं? So we see in Second World War, Japan was very powerful. So here the industrial production was of steel, right? The steel, machinery, metal goods, chemicals, etc. Steel, machinery, metal goods, chemicals, etc. Okay, so this is only a short overview. I am not entering into much detail. ठीक है ना? That in all other in these nations, okay, there are, you can say that, separate topics also कि Belgium में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ. So we are not discussing that. Now you have got a simple idea about this industrial revolution, its growth and development in Europe. Now, impact or consequences, this we need to understand, and this is an important part of your question. What will be the impact of this industrial revolution? Clear? Impact क्या होगा? Now, we can generally divide this impact into different parts. Divide कर सकते हैं. For example, political impact. One impact could be political impact. We are discussing impacts here. The second impact could be administrative impact, economic impact, administrative impact. The third is economic impact, administrative impact, economic impact. The fourth is social impact, social impact of industrial revolution. The fifth is, okay, cultural impact. The fifth is cultural impact of industrial revolution. You can make various subcategories. जब शॉर्ट में लिखना हो तो सब कैटेगरीज बनाने की जरूरत नहीं है. Got it? For example, if you have 60 words to write, so how you can make subcategories, right? So you can write mixed points. ठीक है ना? Now we are going to discuss political impact. Points of political impact. क्या होगा political impact? So industrial revolution has come. Clear? When industrial revolution will come, okay, trade and commerce activities will increase. The business will be magnified. The urbanization will be promoted. Urbanization भी तो promote होगा. Got it? Okay. It means that new challenges will arise. इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ क्या आएंगे? नए challenges आएंगे. New urban centers, new factories, new machines, new economic policies are needed. New challenges will arise, and this will increase the task of the state. Now state had to deal with a wide range of issues. State को बहुत सारे issues को deal करने पड़ेंगे. Okay, new issues, new, you can say that issues will come here. So you can write point one. Point. Write this. Okay. क्योंकि देखो रूल क्या है, ब्रिटेन में कैसा शासन है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देयर इज किंग प्लस देयर इज पार्लियामेंट. यही है ना? गॉट इट? यहाँ पे पार्लियामेंट तो है, बट हियर व्हाट वी सी दैट द वोटिंग राइट्स वेर लिमिटेड. Voting rights were also limited. There was parliament, but the voting rights were limited. क्या करेगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विल गिव बर्थ टू अ मिडिल क्लास. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जन्म दे देगा किस क्लास को? मिडिल क्लास को. ओके. वन इज द कैपिटलिस्ट, अपर क्लास. वही फ्यूडल क्लास जिसके पास पैसा है, वेल्थ है, अरिस्टोक्रेट क्लास. ठीक है, वो हो जाएंगे अपर क्लास. लोअर क्लास वर्कर्स. It will give birth to a middle class, and this middle class will demand what? Voting rights, electoral reforms. ठीक है, ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी. तो कह सकते हो कि वोटिंग राइट्स, इलेक्टरल रिफॉर्म्स, they will be one of the most important demand from the government. Okay, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. राइट? द पीपल में ऑल्सो डिमांड. लोग और क्या डिमांड कर सकते हैं? ओके, to introduce laws and legislations to regulate factories. This will also be an important demand. Introducing laws and legislations to regulate the factories. That will be also an important demand. So factory laws आएगा. And when factory laws will come, what will happen? You need to develop a system of administration for the implementation of these factory laws.
गॉट इट? आपको एक सिस्टम भी तो डेवलप करना पड़ेगा. ओके, सो इन दिस वे व्हाट वी सी दैट इट विल हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट आल्सो. ओके, सो इसी से जुड़ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव impact. So write this, what was the administrative impact? Political impact. What is the administrative impact? So write this, new legislations to regulate labor, factory laws. New legislations to regulate labor, factory laws. New legislations to regulate labor, to regulate factory laws. Okay. So, Hmm. these political impact and administrative impact on. You can say we cannot completely segregate from each other. So here what will happen that this will create the new need of a new administrative class. Okay, so this is what administrative impact. Okay, new administrative class. And what is the task of this administrative class? So the task of this administrative class was to ensure welfare of people. Okay, ensure welfare of people. So this is also administrative impact, political and administrative impact. Got it? That is the next point. Right. Social impact. Social impact. Social impact. Social impact में फिर हम क्या लिख सकते हैं? Middle class. Write this, middle class. Emergence of middle class. Okay. New social groups. New social groups. New social groups. New social challenges. And the rise of new ideas. New social challenges. New social challenges and the rise of new ideas. New social challenges and the rise of new ideas. Which are the new ideas? The ideas are like socialism, utilitarianism, Marxism. ठीक है, तो capitalism तो है ही है. It is related to this. New ideas is what? Socialism, Marxism, utilitarianism, different forms of socialism. This all will appear. Different forms of socialism. This all will appear. Okay. Got it? Right, next point. Okay. Cultural impact. Cultural impact. Okay. New culture. New culture. Read this. Promotion of consumerism. Promotion of consumerism. New culture. Promotion of consumerism. Effect on family system. ये हम सोशल वाले में लिख सकते हैं. फैमिली सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा. कैसे करेगा अभी देखिए. ठीक है. इम्पैक्ट और क्या हो सकता है? ओके, वी कैन से रेड दिस. Urbanization will be promoted. Migration from rural areas to urban areas. Urbanization will be promoted. Migration from rural areas to urban areas. Urbanization will be promoted. Migration from rural areas to urban areas. ठीक है ना? Migration from rural to urban areas. Got it? Right, next point. अच्छा, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है. सो इनिशियल स्टेजेस में क्या लेबर लॉज होंगे? स्ट्रिक्ट होंगे? नो. Women and children will also be incorporated into the factory work. Okay, conditions of working conditions in the factories will not be safer. Number of working hours were not defined. Okay, the children and the women are doing the same task, same job, but they are getting lesser wages or the lesser salaries. So this is what? Exploitation in factories, right? This exploitation of workers inside the factories. Exploitation of workers in factories. This is also an important impact. Exploitation of workers in factories. Exploitation of workers in factories. Exploitation of worker in factories, right? Okay. Right. Discrimination in salary and wages. Discrimination in salary and wages. Discrimination in उसमें भी आएगा. It will come in social impact also. ठीक है. अच्छा, एक और बात बताओ. Women and children will be also be employed to work. Right, this point. Women and children will also be employed to work. That is very important. ये टॉपिक भी आपके एसए के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? Women and children will also be employed to work. Okay. Number of working hours not defined. Number of working hours not defined. ठीक है. 16 to 18 hours the people used to do work. 16 to 18 hours बहुत ज़्यादा होता है. Number of working hour is not defined.
and the people were working for 16 to 18 hours. Children are also working for 16 to 18 hours. And what about the working conditions in these factories? They are safe or unsafe? Unsafe. Okay. Proper fencing is not done. There are dangerous machines around which the people are working. So the working around these machines or the factories is not safe. अच्छा बताओ, children and women, if they work for 18 hours a day, what about their family life? Will there be breakdown of the family as a unit? Yes, children are also working. So if children are working, it means that, okay, children will not get proper education. There will be stunted growth of children. ठीक है? They will remain sick. Their life expectancy will come down. They will suffer from challenges like malnutrition. कुपोषण का शिकायत होगा उनको. Okay, got it? And they will be well behaved, well disciplined, or not well behaved, or not well disciplined. They will not be well behaved, they will not be well disciplined, because they are not taught, they had not got proper education, so they don't know that how to behave properly. And where they are living, settlements will develop around these factories, and these settlements were like slum like habitations, because the workers will come in large numbers, they will settle around the factories so that they could get the jobs easier. So in these slum like habitations, what about the living conditions of the workers? The living conditions is worse or not? Yes. Safe drinking water is available or not? No, safe drinking water is not available. And what about the mortality rate? Infant mortality rate will be very higher, and there will be poverty. Okay, the people will die out of starvation because the factory owners were not giving them proper wages. Clear? There was no any scope for creativity. Is it clear? If you are working for 18 hours a day in factory, so will there be any scope for your creative art? अगर आपको painting आती है, music आती है, नहीं. So all this creativity will die. Okay, it means that the industrialization in Britain, okay, which is having, you can say that there are a lot of positive aspects in this industrialization. It also have a negative side or the flip side. And what is the negative side or flip side? That was it promoting exploitation of people? Yes, it was promoting exploitation of the workers. Is it clear? ये exploitation of workers को promote कर रहा है. Now, for example, okay, capitalism and its relation with feminism, it is debated. थोड़ा सा ये debated भी है, capitalism and its relation with feminism, it is debated. Okay, it means many people will discuss in favor, in opposition. फेवर में बात करेंगे, अपोजिशन में बात करेंगे. फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम केवल फेमिनिन राइट्स की बात कर रहे हैं. इट्स अ वेरी लिमिटेड मीनिंग, आप अगर आप ऐसा समझ रहे हो. फेमिनिज्म का मतलब ये है कि हम हर उस आदमी के अधिकार की बात कर रहे हैं, राइट्स की बात कर रहे हैं जिसके राइट्स को क्या किया गया, सप्रेस किया गया. नाउ व्हेन कैपिटलिज्म विल कम हियर, इट विल बिकम पॉपुलर हियर. तो कैपिटलिज्म और एक दूसरी आइडियोलॉजी है जिसको हम कहते हैं लिबरलिज्म, दोनों एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है. ठीक है. सो हियर आई विल डिस्कस विथ यू मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म. लिबरलिज्म का मतलब आपको बताऊंगा. मैं चाहता तो टॉपिक यहीं पे रोक सकता था, बट ये कॉन्सेप्ट स्किप करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट इज गिवन इन योर पॉलिटी एनसीईआरटी बुक. द कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू is also from your ethics paper, and the concept that I am going to discuss with you will give you a very good idea of liberalism. क्योंकि इसके बाद हमें सोशलिज्म भी पढ़ना है, मार्क्सिज्म भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा लिबरलिज्म के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं. गॉट इट? व्हाट इज दैट लिबरलिज्म? अच्छा एक बात बताओ, कैपिटलिज्म में फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए ना, एंड यू आर गिविंग लेस वेजेस टू द वुमेन. महिलाओं को कम सैलरी देने पड़ रही है. फॉर द सेम वर्क, मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर गेटिंग मोर वेजेस, and female members of the society are getting lesser wages. Female members of the society are working for the same number of hours also, and they have to look at their family responsibility also. So in, if we take example of Indian society, in Indian society also, what has been done? The domestic works that has been done
by a woman in the family. Okay, this domestic work is linked with traditional values and the norms and the traditional role of women. ठीक है, मेरी बात समझना इस बात को, ये कितनी बड़ी बात है कि डोमेस्टिक वर्क that is done by women inside the home, some particular works has been linked with the traditional values of women in our society, and this is what patriarchy. ठीक है, किसी के घर जाते खुद वी ऑल्सो डू द सेम. अगर किसी दोस्त के यहाँ गए, पूरा घर एकदम सजा हुआ है, खूब साफ सुथरा है, तो फिर बोल ही देते हैं कि भाभी ने क्या कमाल कर रखा है, कितना ध्यान रखती है घर का. मेरी बात समझ गया ना? ये कमाल तो भैया जी का भी तो हो सकता है ना. हम ये क्यों कहते हैं कि भाभी जी ने ही घर सजाया है, भैया जी भी घर सजा सकते हैं, क्योंकि हमने ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ क्या किया है, इस काम को जोड़ दिया है. और इस काम का कोई वैल्यू नहीं है. जैसे ही आप ट्रेडिशनल वैल्यू के साथ किसी काम को जोड़ते हो, उस काम का कोई वैल्यू नहीं होता है. दूसरी चीज, रिस्ट्रिक्शंस भी किसके ऊपर इंपोज किए गए सोसाइटी में, वुमेन के ऊपर. ध्यान से समझना इस बात. जब हम कम्युनिटी लाइफ की बात करते हैं, कम्युनिटी लाइफ में ट्रेडिशनल वैल्यूज का भी एस्पेक्ट आ जाएगा, एंड कम्युनिटी विल पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू. मेरी बात समझ गया? जहां पे भी कम्युनिटी की बात आएगी, कम्युनिटी विल पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू. बच्चे कहते नहीं नहीं, घर पे हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, ऑनलाइन में कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है. खूब बन रहा है कंसंट्रेशन, ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा आप ऑनलाइन में पढ़ सकते हो. लेकिन बात यहाँ कंसंट्रेशन की नहीं है, बात कुछ और है. क्या है? फ्रीडम. फ्रीडम क्या है? when you will come out of your family, when you will come out of your village, when you will stay in Delhi Karol Bagh, so no one is coming to see you कि तुम कर क्या रहे हो. There is no any restrictions on you, and you want that kind of individual freedom where there is no any restriction. मेरी बात समझ गया ना? तो ये सबसे खास बात है कि जब हम इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे, तो हम रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की बात करें. और जहां पे कम्युनिटी आएगा, तो वहां पे क्या आएगा, रिस्ट्रिक्शन भी आएगा और ट्रेडिशनल वैल्यू भी आएगा. नाउ आई विल डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड विद दोज बेसिक कॉन्सेप्ट्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड some of the most important topics here. And what I am going to discuss with you is not only confined with history. ये केवल हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है. It's a topic of ethics also, it's a topic of essay also, it's a topic of polity also. एंड इन एग्जाम सच काइंड ऑफ टॉपिक्स आपको यूज करने का मौका हर बार होता है. इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू कैन यूज द पॉइंट्स. तो एवरी ईयर यूपीएससी गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन यूज these points. For example, I am going to discuss the aspects of liberalism. We are going to discuss the aspects of liberalism. ठीक है, liberalism. And in this aspects of liberalism, there are different elements. The first important element here is possessive individualism. Possessive individualism. Possessive individualism. स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद. This is possessive individualism. The second important point is capitalism. Capitalism. यही तो टॉपिक अभी पढ़ रहे थे. Capitalism. So it is one of the expressions of liberalism. कैपिटलिज्म किसका एक्सप्रेशन है? लिबरलिज्म का ही एक्सप्रेशन. द थर्ड पॉइंट इज राइट competitive global market. The third point is competitive global market. Competitive global market. This is the third point, right? The fourth point is laissez-faire state. And laissez-faire का मतलब क्या होता है? Free trade policy. It means what? Laissez-faire state means the state which is not interfering or least interfering in the economic activities. That is the concept of laissez-faire state. So the fourth expression is the expression of laissez-faire state. And such kind of a state is what? Non-interventionist state. ये state क्या है? This state is non-interventionist state. Non-interventionist state. This is laissez-faire state. Okay. And there are many more other expressions. ठीक है, और भी बहुत सारे expressions. For example, okay, IPR related concepts, right? This uniform rules like WTO. WTO had made what? Uniform rules. ये भी liberalism का ही expression. Okay. When you talk about the intellectual property rights, IPRs, this is also an expression of
लिबरलिज्म, ये भी है लिबरलिज्म का एक्सप्रेशन। एंड नाउ वी आर हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस लिबरलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म 15th सेंचुरी से ही है, 15th century, but after this industrial revolution, it means mid 18th century onwards, what has happened? This capitalism has become more popular. Mid 18th century से this capitalism has become more popular. ये capitalism ज़्यादा popular हो गया. Now I will discuss some basic concepts with you. Clear? For example, okay, can you imagine two individuals, two human beings in your district, in your state, in your country, in this entire world, in this entire universe, two individual having the same abilities, having the same capabilities? क्या आप कभी आपको दो ऐसे लोग मिले हैं जिनकी एबिलिटीज एकदम इक्वल हो, कैपेबिलिटीज एकदम इक्वल हो, जिनकी क्षमता एकदम इक्वल हो? यस और नो? हैव यू गॉट एनी टू पर्सन हु हैज द सेम लेवल ऑफ एबिलिटी, एकदम बराबर, आईक्यू बराबर हो, फिजिकल फिटनेस, पावर, फिजिकल कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कहीं भी एक जैसा हो? नो. इट मीन्स दैट इन नेचर ऑल्सो देर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ रिपीटेशन. ठीक है, देर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ रिपीटेशन. रवि तेजा है तो वो अकेला है, ठीक है, ये बात समझ लो, कोई दूसरा रवि तेजा नहीं हो सकता. ठीक है, तो हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी, देयर इज एन इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. गॉट इट? हम सब में सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है. देयर इज नो एनी रिपीटेशन. रिपीटेशन है ही नहीं. क्या समान है? इज देयर इक्वलिटी इन द कैपेबिलिटी? द आंसर इज नो. यू कैन नॉट इमेजिन दैट वी आर इक्वल इन आवर कैपेबिलिटीज. तो जब हम अपनी कैपेबिलिटीज में ही इक्वल नहीं है, तो क्या इस बात को सोचना प्रैक्टिकल है कि सबके पास इक्वल रिसोर्सेज हो और इक्वल प्रॉपर्टी है? इज इट प्रैक्टिकल? नो. सोशलिज्म सेज इक्वलिटी, इक्वलिटी लाओ. लिबरलिज्म क्या कहेगा? कहेगा कैसे इक्वलिटी लाओ? आप बताओ, दुनिया में किसी भी दो ऐसे इंसान को बता दो जिसकी कैपेबिलिटी एक जैसी है. तो जब कैपेबिलिटी ही एक जैसी नहीं है, तो प्रॉपर्टी कैसे इक्वल हो जाएगा? रिसोर्सेज कैसे इक्वल हो जाएगा? आप राइट्स, डिग्निटीज. अब देखो क्या है, ये मुद्दा तो बताया लिबरलिज्म का एक एक्सप्रेशन. दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? जैसे देयर आर टू टर्म्स हियर, देयर आर टू टर्म्स, राइट दिस. ओके, वन वर्ड इज, आपने सुना भी होगा, प्रोसीड्यूरल जस्टिस. वन इज व्हाट? प्रोसीड्यूरल जस्टिस. ध्यान से समझना इस बात को, आपकी पॉलिटी के एनसीईआरटी में भी दिया होगा, प्रोसीड्यूरल जस्टिस. एंड द सेकेंड वर्ड इज सब्सटेंटिव जस्टिस. प्रोसीड्यूरल जस्टिस एंड दिस इज व्हाट? सब्सटेंटिव जस्टिस. सब्सटेंटिव जस्टिस, ठीक है ना? प्रोसीड्यूरल जस्टिस. प्रोसीड्यूरल जस्टिस इज डीओंटोलॉजिकल इन नेचर. इथिक्स में आप पढ़ोगे, यहां मैं आसान वर्ड में बता दूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ deontological. Procedural justice is deontological in nature and substantive justice is teleological in nature. This is what? Teleological in nature. And what does it, the meaning? Meaning अब देखने जाते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे. Procedural justice. Is it clear? Procedural justice. तो प्रोसीड्यूरल जस्टिस की बात कौन करेगा? डीओंटोलॉजिकल का मतलब होता है, देखो, प्रोसीडर. इट मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन प्रोसीडर्स. यहाँ पे फोकस किस में होगा? प्रोसीडर्स, प्रोसेस पर, प्रोसेस में. ओके, व्हाट विल नॉट बी फोकस्ड हियर? ओके, सो रिजल्ट्स. ओके, रिजल्ट्स, राइट, रिजल्ट पे यहाँ आपको ध्यान नहीं देना. कहाँ ध्यान देना है? प्रोसीडर पे, प्रोसेस पे. अब देखो क्या है, क्या है ये प्रोसीडर और प्रोसेस. ओके, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जिससे हम ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे. ठीक है, एंड दिस आर्ग्यूमेंट इज इन सपोर्ट ऑफ द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मैंने बात कहा कि हम सबकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी अलग अलग है, और फॉर कंपटीशन व्हाट शुड बी डन? रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए जाने चाहिए हम सबके ऊपर से. अगर रिस्ट्रिक्शंस रहेगा तो हम अपनी पर्सनालिटी का ऑल अराउंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं. So there should not be any restrictions
ऑन अस। ध्यान से समझना, अगर रिस्ट्रिक्शन है तो आप अपनी पर्सनालिटी का ऑल अराउंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और इसीलिए हमारे ऊपर से सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस क्या होने चाहिए, हटा लेने चाहिए, राइट। नाउ अगर हम सबके ऊपर से सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए जाएंगे तो ये एक तरह का जस्टिस होगा, राइट। एंड इन दिस जस्टिस वी कैन से दैट ईच पर्सन, ईच इंडिविजुअल विल बी काउंटेड एज वन इंडिविजुअल, each person, each individual will be counted as one individual in this situation. So there will be no any restrictions. We should keep the process fair. We should keep the process transparent. यहाँ पे process को क्या रखने की जरूरत है, fair and transparent. Fair and transparent. The processes should be kept fair and transparent. ठीक है, आप रिजल्ट की चिंता मत करो, प्रोसेस को क्या करो, फेयर और ट्रांसपेरेंट रखो, और जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को आप क्या कर लो, एक्सेप्ट करो। दिस इज व्हाट प्रोसीडियरल जस्टिस, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, रिजल्ट को डिओंटोलॉजिकल, इट्स नॉट टेकिंग केयर ऑफ रिजल्ट। टेलियोलॉजिकल जहां रिजल्ट को ध्यान में रख के काम किया जाता है पहले से, और डिओंटोलॉजिकल जहां आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हो, प्रोसेस को इक्वल रखने के बारे में सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ऑल आर प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल में क्या करना चाहिए, हमें प्रोसेस की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पे ध्यान रखना चाहिए। गॉट इट। तो जिस टीम में कैपेबिलिटी होगी, जिस टीम के प्लेयर्स में कैपेबिलिटी होगी, वो मैच अपने आप जीत जाएगा। जो मैच जीत जाएगा वो क्या करेगा, रिवॉर्ड ले जाएगा, क्योंकि वो कंपटीशन में क्या है, फिट है, ठीक है। तो वो रिवॉर्ड ले जाएगा, वही रिवॉर्ड ले जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फोकस किस बात पे है, फ्रीडम पे है, रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने पे है, या इक्वलिटी को इंश्योर करने पे है। तो यहाँ पे इक्वलिटी को लाने पे ज्यादा फोकस नहीं है। द मेन फोकस इज टू रिमूविंग, ऑन रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस। ओके, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस, ये सबसे मेन फोकस है। टू कीप द प्रोसेस फेयर, फेयरनेस, राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, दैट वी हैव टू कीप द प्रोसेस फेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सब्सटैंटिव जस्टिस में, टेलियोलॉजिकल में, substantive justice and teleological. Okay, so in substantive justice and teleological, okay, you keep it in mind that, okay, we are following a process, and कहीं ऐसा ना हो कि while following this process the result which will come, okay, the result will create inequality in the society, आप ये सोचने लगते हो। okay, that is what idea of substantive justice। जैसे यू मान लो यूपीएससी का एग्जाम कराया और रिजर्वेशन को इसमें से हटा, गॉट इट। रिजर्वेशन को हटाने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि प्रोसेस को क्या कर दिया, फेयर कर दिया, जस्ट कर दिया, देयर इज नो एनी रिजर्वेशन, बट द रिजल्ट्स विल डू व्हाट, द रिजल्ट्स माइट प्रोमोट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। हो सकता है कि सोसाइटी का जो मार्जिनलाइज क्लास है, इसको रिप्रेजेंटेशन ना मिल पाए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप ये बात सोचोगे तो सब्सटेंसिव जस्टिस के लिए क्या करोगे, रिजर्वेशन लेके आओगे। गॉट इट, मेरी बात समझ गया ना। प्रीलिम्स एग्जाम वही होगा, सारे बच्चे सेम पेपर अटेम्प्ट करेंगे, बट कोई प्रीलिम्स कम मार्क्स ला के क्वालिफाई कर जाएगा, किसी के लिए प्रीलिम्स के लिए ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। क्यों, आपने ये प्रोसेस को फेयर रखा है, यस इट इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, बट ये अलग अलग खिलाड़ी के लिए अलग अलग रूल्स आपने बना दिए। और क्यों बना दिए, क्योंकि यहाँ पे किस बात को आपने ध्यान में रखा, रिजल्ट को ध्यान में रखा, कि कहीं रिजल्ट सोसाइटी में इनइक्वालिटी ना लेके चला। तो जब लिबरलिज्म आएगा वो रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की बात करेगा, कहेगा रूल्स को फेयर कर दो, बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हटा दो, रूल्स को फेयर कर दो, और जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी, ठीक है, वो मार्केट में क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी वो मार्केट में सरवाइव कर जाएगा। लिबरलिज्म किस चीज की बात करेगा, ओपन कंपटीशन, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कह रहे हो अमेजन और दूसरे प्लेटफॉर्म आने से छोटे दुकानदारों का बिजनेस प्रभावित हो गया, लिबरलिज्म कहेगा ये सब मत सोचो, आपने क्या किया, रूल्स फेयर बनाए, छोटा प्लेयर भी बड़ा बन गया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरी बात समझ गया ना। आपने कहा कि हमने रूल्स को क्या कर दिया, फेयर और ट्रांसपेरेंट बना दिया, द कंपटीशन इज ओपन। सो इस ओपन कंपटीशन में जो फिटेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा,
सरवाइव कर जाएगा। यानी यहाँ पे किस बात को आपने ध्यान में रखा, इंडिविजुअलिस्टिक ओपिनियन है कि ये कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ओपिनियन है, तो लिबरलिज्म ऑलवेज प्रोमोट इट, राइट? दिस लिबरलिज्म विल प्रोमोट इंडिविजुअलिज्म। लिबरलिज्म का और इंडिविजुअलिज्म का आपस में क्लोज रिलेशन है। इट विल प्रोमोट इंडिविजुअलिज्म, इट्स अ इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। क्लियर? Here individual will come first and community life will come after. यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? Individual. Here individual will come first and then you will see what? Community life. इसके बाद आप किसको देखोगे? Community life. ठीक है ना? That is the most important thing. ठीक है? Individual will come first. Okay. Community life later. Individual जहाँ first है, वहाँ क्या होगा? Restrictions कम होंगे। मेरी बात समझ गया ना? कम्युनिटी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस क्या होगा? ज्यादा होगा। जहां पे इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया होगा वहां पे अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस लेने वाले आप खुद ही होगे। जैसे मेरे अपार्टमेंट में मैं कभी भी आऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं स्टूडेंट लाइफ में रहता, मेरी लैंड ओनर थी, आंटी थी, 10 बजे के बाद एंट्री नहीं देती थी, आने नहीं देती। मेरी बात समझ गया ना? ठीक है। तो देखो, जब आप कम्युनिटी लाइफ में रहते हो तो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लिबर्टी की मात्रा बढ़ जाएगी। यू विल टेक द डिसीजंस अबाउट योर ओन लाइफ। अच्छा देखो, जब when the people will start taking decisions about their own life, that's a kind of self determination. What about the social dogmas? Social dogmas weak होंगे कि strengthen होंगे? Individualism. Social dogmas will become weaker क्योंकि ये फोकस इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल की मर्जी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो किसी सोशल डॉगमा को एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट नहीं करे, राइट? दिस इज व्हाट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है। अभी क्या है, जैसे मान लो कि अरेंज मैरिज के बाद लव मैरिज का कॉन्सेप्ट आया, अब लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आया। कुछ दिन पहले न्यूज में मैंने देखा, कोई बंदा था तो कुछ केस वगैरह थे, तो उसने लिव इन रिलेशनशिप के लिए कोर्ट का एग्रीमेंट करवा रखा था। समझ गया ना? ये भी न्यूज में आया। तो ये उसकी इंडिविजुअल राइट है। ठीक है। लेकिन गांव में अगर वो होता, किसी गांव में रह रहा होता, तो लोगों ने अच्छी खासी पिटाई कर दी होती उसकी। ठीक है ना? कहा इतना भी सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट्स तुमको हम नहीं देते। बट ये एक अलग तरह के कल्चर को प्रमोट करेगा। आई मीन टू से दैट व्हेन वी टॉक अबाउट लिबरलिज्म, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल कल्चर, ओके, this industrial revolution will promote this idea. Liberalism, absence of restriction, community life will become weaker, social dogmas will become weaker. The people will start from migrating from rural area to urban area. और urban area में जाते हो तो क्या होता है? इंडिविजुअल फ्रीडम बढ़ जाता है, आपको रोकने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? कल्चरल हैबिट्स भी चेंज हो जाते हैं। दिस विल ऑल्सो ब्रिंग चेंजेस इन द कल्चरल हैबिट्स। The traditional norms and values will become weaker. For example, in patriarchy, the same woman who was given the task to look after the domestic work, now the same woman is working in factories. This is what the dogmas are becoming weaker. और एक टाइम आएगा that the women will fight for their political rights, the women will fight for their other rights, they will oppose all the elements of gender discrimination. This all will come. Clear? So now I mean to say that when we talk about liberalism, okay, so this capitalism is one of the reflections of liberalism. And capitalism is basically, we can say that in its developed stage, it is a byproduct of industrial revolution also. हालांकि ये industrial revolution से पहले है, but it can also be related to what? Industrial revolution. Clear? Industrial revolution. तो ये किस चीज की बात करेगा ये आइडिया? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस की बात करेगा। ओके, व्हाट अबाउट द रोल ऑफ स्टेट? स्टेट को क्या करना चाहिए? स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्टेट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और स्टेट शुड हैव मेनी वेरी मिनिमम इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Right. Am I audible, Ravi? Okay. For example,
British government gave monopolistic rights to East India Company, and it was monopolistic rights. Obviously, the rights of other businessmen, other individual traders is affected by this monopolistic right. So what this idea will demand? कि ये monopolistic rights को क्या करो, खत्म करो. State should not interfere in the economic activities. State को economic activities में interfere नहीं करना चाहिए. इसका result क्या होगा? Gradually what will happen? Okay, it will happen gradually that, okay, these structures will become very much powerful. Idea of individual freedom, profit making. Okay, now the capitalist will focus on what? More and more profit making. That will be the main objective of the capitalist, कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? प्रॉफिट मेकिंग. ठीक है. और प्रॉफिट मेकिंग का तरीका क्या है? कि वर्कर्स को क्या करो? कम सैलरी. वर्कर्स से क्या करो? नंबर ऑफ जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स होते हैं उससे डबल आवर्स में उनको काम करवाओ. पे देम लेस सैलरीज एंड इन दिस वे वी कैन मेक मोर प्रॉफिट्स. सो ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन विल बी अपोज होगा कि नहीं, राइट? सो अ टाइम विल कम एंड हियर व्हाट विल हैपन, ऑल द वर्कर्स आर लिविंग टुगेदर इन स्लम हैबिटेशंस. तो आस पास तो वो रहने लगे हैं. So obviously, if they are living together, so they are sharing their griefs, there are problem. अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं है, तो ये बात तो उन्हें समझ में आ रही है ना. तो अ टाइम विल कम. फर्स्ट व्हाट वी सी दैट द पीपल आर फोकसिंग ऑन गिविंग मोर एंड मोर फ्रीडम, लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है ना. प्राइवेट मतलब प्राइवेट सेक्टर इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग हिस्ट्री हियर. ओके, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट लेक्चरर. गॉट इट? I'm not a government lecturer. Now imagine that if I am a government lecturer, so I will get 1 lakh rupees or 1.25, ठीक है, approximately monthly salary होगी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाऊँ या बहुत खराब पढ़ाऊँ. मेरी बात समझ गया ना? मैं क्लास में 40-50 मिनट तक खड़ा रहूँ, मेरी नौकरी कोई नहीं ले सकता. मेरी मर्जी, मैंने एग्जाम क्लियर किया है. मैं मेहनत करूँ ना करूँ, अपने स्किल को इम्प्रूव करूँ ना करूँ, डज नॉट मैटर. मेरे को एक फिक्स सैलरी हमेशा मिलती रहे. But if I am teaching in this private sector में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, the same history I am teaching, if I will not improve my skill, what will happen? The market will not recognize me. But if I will keep improving my skills, I can earn a lot of money from market. ठीक है. मार्केट से आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, बिकॉज मार्केट रिस्पेक्ट्स व्हाट? टैलेंट. मार्केट किस चीज की बात करता है? टैलेंट की बात करता है. मेरी बात समझ गया ना? ठीक है. यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाके आप क्या कर लोगे? ठीक है, नहीं कर सकते ना. मार्केट में किस चीज का दबदबा हमेशा बना रहेगा? टैलेंट एंड कैपेबिलिटी. और लिबरलिज्म इसी बात पे फोकस करता था कि टैलेंट और कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करो. आप इसके बारे में मत सोचो कि सबके पास इक्वल प्रॉपर्टी हो. ठीक है, रिसोर्सेज इक्वल होने चाहिए, या द गवर्नमेंट विल इंटरवीन फॉर ब्रिंगिंग इक्वलिटी. का दिस इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि नेचर ने क्या किया है? किसी भी दो लोगों को, किसी भी दो इंडिविजुअल को एक जैसा नहीं बनाया है. हम सबके पास हमारी कैपेबिलिटी क्या है? अलग अलग है. तो ऑब्वियस है कि उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होंगे? रिसोर्सेज भी होंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट द फोकस ऑन लिबरलिज्म. मेरी बात समझ गया ना? लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, ओके, एंड इंडिविजुअलिज्म, ऑल दीज आर रिलेटेड विद ईच अदर. सब एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड. ठीक है. सो दिस आइडिया वाज गेनिंग पॉपुलैरिटी. Now what will happen? Flip sides of, I have already discussed with you, flip sides of Industrial Revolution will promote what? Exploitation of workers. Clear? And when this exploitation of workers, it will be continued for hundreds of years. What we see? We see another ideology, and that ideology is socialism. And this socialism lays emphasis on the idea of equality. Socialism किस बात पे ज्यादा जोर डालता है? सोशलिज्म लेज एम्फेसिस ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी. और कैपिटलिज्म जो था, कैपिटलिज्म इट वाज लेइंग एम्फेसिस ऑन द आइडिया ऑफ लिबर्टी और एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. ये किस चीज बात करता था? लिबर्टी और एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. इट बिलीव्ड इन व्हाट? प्रोसीडियरल जस्टिस. It believed in what? Procedural justice. Believing in liberalism, procedure justice. का इकोनॉमिक एक्टिविटीज के प्रोसीडियर्स को फेयर, जस्ट और ट्रांसपेरेंट बना दो, और बाकी स्टेट को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है.
रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आप प्रोसेस को फेयर कर दो। गॉट इट? दिस इज द आइडिया ऑफ प्रोसीड्यूरल जस्टिस. And now what is socialism here? Focusing on equality. And in order to bring equality, what is needed? A state intervention is needed or not? बताओ. In order to bring equality, जैसे इंडिया में क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. हमने दोनों मॉडल्स को अडॉप्ट किया है, राइट? तो in order to bring equality, what we see? Okay, the state intervention, ठीक है, इंडिया में भी. So this in order to bring equality, what is needed? A state intervention is needed. ठीक है ना? इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, factors of production. Okay, who will be the owner and the other ideas, I will discuss it when I will discuss the concept of Marx. तो मार्क्स के कॉन्सेप्ट में उसको इंक्लूड करेंगे. कैपिटलिज्म के there are some more debates of capitalism I will discuss when I will discuss the concept of Marx. ठीक है, socialism and communism जब वो डिस्कस करेंगे तो उसके साथ होगा. Got it? Write some questions here. Questions. Okay. अभी ये खत्म नहीं है. When I will discuss socialism दोबारा से आएगा capitalism. Right concept. First question. Question number 1. Read this. Okay. Discuss. The growth and development of industrial revolution. Discuss the growth and development. Discuss about the growth and development of industrial revolution in Britain. Discuss about the growth and development of industrial revolution in Britain. Okay. And also write a short note. On the expansion of industrial revolution in other countries. Also write a short note on the expansion of industrial revolution in other countries. Also write a short note on the expansion of industrial revolution in other countries. Got it? Write question number 2. Last में क्या बता देना? Britain, Belgium, Germany, Russia, Japan. एक short note, short introduction. Right? Next question. Do you agree with the fact that okay, do you agree with the fact that industrial revolution in Britain was mainly, do you agree with this fact that industrial revolution in Britain was mainly a textile revolution? Do you agree with this fact that industrial revolution in Britain was mainly a textile revolution? Discuss. Mainly a textile revolution. Got it? Right, next point. Discuss the impact of industrial revolution. Discuss the impact of industrial revolution. Right, next question. Discuss how industrial revolution okay, was successful in laying down. Discuss how industrial revolution was successful in laying down a profound influence on the history of the world. How it was successful in laying down a profound influence on the history of the world. What will you write in this answer? Consequences, long-term consequences. Let's say industrial revolution influenced what? French Revolution. Growth of nationalism in Europe. ठीक है? Germany. Age of new imperialism. Colonial rivalries were promoted. ठीक है? One reason for First World War. ये सारी चीजें बतानी. Got it? Okay? Role of US in First World War. US focuses on the idea of that right of self determination. तो ये सारी चीजें आप relate कर सकते हो. हाँ, अफ्रीका का भी पार्टीशन है पूछा. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, वो मैं भूल ही गया था, वो भी बता दूंगा. पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, बर्लिन कॉन्फ्रेंस. ठीक है, ये भी इससे जुड़ जाता है. कॉलोनियलिज्म, ये भी किससे जुड़ जाता है? इंडस्ट्रियल
रेवोल्यूशन से। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस आइडिया को प्रमोट करेगा? कैपिटलिज्म। और इसका रिएक्शन क्या होगा? अ न्यू आइडियोलॉजी विल कम, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आइडियोलॉजी? सोशलिज्म। ठीक है। और सोशलिज्म विल आल्सो हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बाई प्रोडक्ट एक तरह से कैपिटलिज्म है, एग्जैक्ट बाई प्रोडक्ट नहीं कह सकते बिकॉज 15 सेंचुरी से है। और इन सब चीजों की वजह से जो फ्लिप साइड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसकी वजह से क्या आ जाता है? सोशलिज्म। और सोशलिज्म की वजह से क्या आता है? रशियन रिवोल्यूशन, चाइनीज रिवोल्यूशन, कोल्ड वॉर, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीरियड ऑफ टू वर्ल्ड वॉर, ये सारा कुछ रिलेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोल्ड वॉर भी तो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। नाउ देखो, नाउ वी विल एंटर इनटू द टॉपिक सोशलिज्म। ओके, फिर से यहाँ हमें एक बेसिक बात कैपिटलिज्म का जानना है। तो व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, व्हाट इज कैपिटलिज्म? तो इन लिमिटेड सेंस द मीनिंग इज व्हाट? एब्सेंस ऑफ restrictions. In limited sense, the meaning of capitalism is absence of restrictions. ठीक है? And when we talk about capitalism, basically, okay, it talks about, read this, an economic system. It's an ideology which supports an economic system that is based on industrial production. It supports an economic system that is based on industrial production. Capitalism, this idea, supports an economic system that is based on industrial production. ठीक है? And here, the means of production in this industrial production, right? The means of production. What could be the means of production? The idea is very simple. Means of production क्या हो सकता है? जैसे, for example, if I want to set up a factory, I will need land. So either I can purchase it or I can take this land on rent. So land is what? Means or factors of production. Got it? On land I will construct the establishment building. So that building is also what? Factor of production. Clear? अगर मैं इंडस्ट्रीज लगा रहा हूं तो आई विल नीड व्हाट? रॉ मटेरियल्स. आई विल परचेज दैट रॉ मटेरियल, दैट इज आल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. If I am opening a factory, I will need to install machines in that factory. तो जो machines मैं लगा रहा हूँ, that machine is also what? Factor of production. मशीनरी में जो मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, that is also factor of production. Capital में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, that is also factor of production. I will need an initial capital or the seed capital. That is also what? Factor of production. वो सारा का सारा क्या है? Factor of production. Clear? So what is the components of factor of production? You can write here: land, building, land, building, machines, raw materials, raw materials. You can say initial capital, initial capital, initial capital, or the labor cost, or I will purchase raw material, so I will need that initial cost. All these are the factors of production. Got it? Okay. So in capitalism, all these factors of production are owned by, read this, these are owned by, these are owned by, okay, private entrepreneurs. They are also called capitalists. All this is owned by private entrepreneurs. ठीक है, they are also called capitalists. Owner कौन है? Private entrepreneur. Clear? So here in this capitalistic model, all the means of production or the factors of production are owned by capitalist. यहाँ owner कौन है? Capitalist. Okay, and this capitalist has risk taking ability. बिजनेस शुरू करने वाले आदमी के पास क्या होता है? रिस्क टेकिंग एबिलिटी. तो मान लो कि यू आर द बिजनेसमैन, आपने ये सब कुछ लगाया. एंड नाउ व्हाट अबाउट द वर्कर्स? दूसरा क्लास कौन सा है? वर्कर्स. वन क्लास इज द क्लास ऑफ entrepreneurs, the second class is the class of workers. So write this: class of workers, class of workers. Now here, what about class of workers? They are free to work in any factory. वो किसी भी काम फैक्ट्री में काम करने के लिए फ्री है. वर्कर्स आर फ्री टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एंड दे कैन सेल व्हाट? वो क्या बेच सकते हैं? दे कैन सेल देयर वर्क.
उनके पास जो स्किल है वो क्या है? देयर वर्क, देयर लेबर, सो दे कैन सेल इट wherever they want. There are 5 factories, factory A, B, C, D, E. Worker will visit that factory, and the factory owner, which will offer him highest payment or the wages, so is free to join that factory. उसको चिंता नहीं है, आज आपके यहाँ काम कर रहा है, कल को 10,000 रुपए ज्यादा कोई देगा, दूसरे की फैक्ट्री में चला जाएगा. So he is selling what? His labor force. And here capitalist has done what? Invested his everything, money, capital, everything. He has also taken risk. Now this capitalist wants that state should not interfere in the economic activities. There are many private entrepreneurs. The state should not interfere in the economic activities, so there should be a level playing field. No intervention of a state. और अगर जरूरी है तो लीस्ट इंटरवेंशन, जैसे लेबर लॉ वगैरह बना लिया, इस तरह का इंटरवेंशन. Otherwise, state will not involve itself directly in the economic activities. That is non-intervention state. So this model will advocate which kind of a state? So this model will advocate for a non-interventionist state. That the state should not interfere in the economic activities of the individuals. ठीक है, स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. अब मान लो कि हम 10 लोगों ने फैक्ट्रीज ओपन करें. देयर 10 पीपल. सबने क्या ओपन किया? शू फैक्ट्री. गॉट इट? सबकी शू फैक्ट्री. नाउ it depends on our talent, how we are branding our products, how we are, you can say that, improving the quality of our products. And what will happen if this kind of private entrepreneurs who are opening new factories, producing new goods, will also be helpful in bringing down the cost of the product. कंज्यूमर के पास जब ऑप्शन ज्यादा होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? The product cost will come down because it will do what? It will increase competition in the market. इससे क्या होगा? मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा. ये है कैपिटलिज्म की कंपटीशन की स्पिरिट को क्या करो? प्रमोट करो. मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है तो बढ़ने दो. कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट्स के कॉस्ट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. ठीक है ना? तो ये इनके लॉजिक है कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. लेकिन एक टाइम आने के बाद क्या ये पॉसिबल है कि ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कार्टेल बना ले, आपस में प्लान कर ले कि जो मोबाइल रिचार्ज होता है 1 मंथ का, कोई 300 रुपए से कम में नहीं करेगा? चांसेस हैं कि नहीं? बताओ. दिस इज नॉट फेयर. ये फेयर नहीं है. ठीक है, स्पिरिट तो ये थी कि कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, लेकिन आप देखोगे कि सबका प्राइस एक ही बराबर है. मेरी बात समझ गया ना? ये है फ्लिप साइड ऑफ कैपिटलिज्म. ठीक है ना? एक टाइम था कि फ्री था, अभी क्या हो गया? सबका प्राइस क्या हो गया? एक जैसा हो गया. ओके, तो कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल ये लगे. जैसे अब देखो मार्केट में क्या है, मेनी पीपल विल कम एंड दे विल गिव यू प्रोडक्ट्स फॉर फ्री टू यूज. ठीक है, आप सुबह सुबह सब्जी लेने गए, सब्जी के दुकान वाले ने कहा कि ये दूध का पैकेट है 1 लीटर, आई एम गिविंग यू फ्री. आई विल गिव यू फ्री फॉर 30 days. 30 days का लॉस वो सह सकता है, क्योंकि उसके बाद, ठीक है, if you will get accustomed to use that product, you will start getting the product from that shop. Okay, they will deliver at your home for free. 8 minutes में डिलीवर करेंगे, 10 minutes में डिलीवर करेंगे. ठीक है, छोटे दुकानदार के साथ तो दिक्कत है. ठीक है, कभी मोनू की मम्मी दुकान चला रही है, कभी मोनू के पापा दुकान चला रहे हैं. ठीक है, तो वो 8 minutes में कैसे डिलीवर कर पाएंगे? और आपको क्या लगता है जब वो छोटे शॉपकीपर्स खत्म हो जाएंगे तो ये आपको 8 minutes में डिलीवर करेंगे? दे विल चार्ज यू कि अगर 8 minutes में चाहिए तो इतना पैसा लगेगा, हाफ आवर में चाहिए तो इतना पैसा लगेगा. ठीक है, दोपहर तक चाहिए तो इतना पैसा लगेगा, इवनिंग में डिलीवरी लोगे तो इतना पैसा लगेगा. एवरीथिंग विल बी चार्ज. ओके, so this is what flip side of capitalism also. Okay, now this idea is focusing on what? Okay, liberalism, or the idea of promoting liberalism. Now the next idea that will appear here is socialism. अगली आइडियोलॉजी जो यहाँ आएगी वो क्या है? सोशलिज्म. एंड सोशलिज्म विल फोकस ऑन व्हाट? सोशलिज्म का फोकस कहाँ होगा? इक्वलिटी पे. सोशलिज्म विल एम्फसाइज और विल गिव फोकस ऑन इक्वलिटी. अच्छा, इक्वलिटी लाने के लिए क्या चाहिए? इक्वलिटी लाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस तो होगा ही होगा. गॉट इट? और हु विल ब्रिंग दीज रिस्ट्रिक्शंस? स्टेट.
स्टेट विल ब्रिंग दीज रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे स्टेट कैसा है, स्टेट हो जाएगा इंटरवेंशनिस्ट स्टेट हो जाएगा, इंटरवेंशनिस्ट स्टेट हो जाएगा। गॉट इट? द स्टेट विल बी इंटरवेंशनिस्ट स्टेट। ठीक है। द सेम एग्जांपल कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी लाइफ में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस। कम्युनिटी लाइफ में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस। गॉट इट? individualism, no restrictions. Got it? So what is socialism? So socialism is a theory, it is a policy, okay, which will focus on what? तो सोशलिज्म इस बात पे फोकस करेगा, और इस टेक्निकल डेफिनेशन को देखें कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, जिसमें जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, इसके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, okay, who will be the owner of this factor of production? The owner of all this factor of production will not be an individual. यहाँ इंडिविजुअल नहीं होगा। यहाँ पे ओनर कौन हो सकता है, ओनर पूजा हो सकती है, रवि हो सकते हैं, बट यहाँ पे ओनर पूजा और रवि नहीं होंगे। ओनर किसकी किसकी ओनरशिप होगी? द ओनरशिप विल बी द ओनरशिप ऑफ द कम्युनिटी और द ओनरशिप ऑफ द स्टेट। दिस इज द मेन डिफरेंस। So in socialism, what do we read? That in socialism, it talks about a kind of economic system where, okay, all the means of production or the factors of production, whether this is land, this is building, this is machine, this is raw material, this is initial capital, everything will be owned by the state, everything will be owned by the community itself. ये own कौन करेगा? State. ये own कौन करेगा? Community. That is the point. That state और community इसको क्या करेगा? Own करेगा. Right? Public authority, state, community. And why state will look after this? Because state will ensure what? Idea of equality. ठीक है, स्टेट को क्या करना है? इंश्योर करना है आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ये बहुत ही सिंपल मीनिंग था, राइट? सोशलिज्म is understood differently. There are different definitions of socialism, and one scholar has said that socialism, the concept of socialism, is like a hat that has lost its shape because everybody wears it. तो सोशलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको जिसने जैसे चाहा वैसे डिफाइन कर दिया। मेरी बात समझ गया ना? सो देयर आर मेनी डेफिनेशंस ऑफ सोशलिज्म। गॉट इट? जैसे फैक्ट्री सिस्टम ने इंसान को क्या किया था? आइसोलेटेड कर दिया था। ठीक है, इफ आई विल वर्क फॉर 15 आवर्स, इफ आई विल वर्क फॉर 12 आवर्स, transportation will take 2 to 3 hours. After this, do you think that I will try to live in cooperation with the other members of my society? No. मैं थक जाऊंगा, घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। तो इससे क्या होगा? जो आइसोलेशनिज्म है ये प्रोमोट होगा। गॉट इट? कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या प्रोमोट होगा? आइसोलेशन। बट जब हम सोशलिज्म की बात करेंगे, सो हियर इंडिविजुअल्स डू नॉट लीव in isolation. The individuals do not work in isolation. The individuals will live in cooperation with each other. Whatever the product that will be produced, that product will be social product. That will not be individual product. जो product produce होगा वो कैसा product होगा? Social product. And when we say social product, what does it mean? That product will be shared by all, right? The member of the community is entitled to share that product. Got it? It means in that case the society should own for the benefit of all its members. Or individualism में, individualism was owing for the benefit of self. ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मेरे पास आ जाए। Got it? For example, when French Revolution took place in 1789, what was the slogan of the French Revolution? Liberty, equality, and fraternity. So wherever you find this word equality, it is a manifestation of which idea? Socialism. तो क्या सोशलिज्म था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? यस, इक्वलिटी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लोगन। क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इंडिविजुअलिज्म था, कैपिटलिज्म था? यस और नो? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मैनिफेस्टेशन था? यस, देयर वाज द मैनिफेस्टेशन बिकॉज द वर्ड विच वी यूज वाज लिबर्टी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी वर्ड को भी यूज किया था। तो दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लिबरलिज्म। अब इन सोशलिज्म ऑल्सो वी कम अक्रॉस डिफरेंट वर्ड्स व्हेन वी रीड बुक। फॉर एग्जाम्पल, one word is
यूटोपियन सोशलिज्म। मैंने कहा ना कि सोशलिज्म ऐसी टोपी है जिसका शेप ही गड़बड़ हो गया, जिसने जब चाहा वैसे पहन लिया इसको। सो वन सोशलिस्ट आइडिया इज यूटोपियन सोशलिस्ट आइडिया, वन सोशलिस्ट आइडिया इज scientific socialist idea given by Marx, given by Engels. Okay, one kind of division is evolutionary socialism and revolutionary socialism. ये भी एक division है, evolutionary socialism and revolutionary socialism. Got it? This is also one of the divisions. So what is evolutionary socialism and what is revolutionary